Joy sir. Hello Joy sir, thanks for coming in this space. तो जॉय सर प्लीज शॉर्ट में थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए मार्केट में, एंड आप मार्केट में कितने इयर्स से हैं, थोड़ा हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए. Hello everyone. I think most of the listeners know a little bit of it. Actually, it has been around 14 15 years. Since 2007 I started, and thereafter gradually I gained some time I lost. It is not about always money, but it is all about the knowledge that I gained, even with the loss, whatever I have made throughout the time, throughout the bear market, and sometime I made some money as well. So it is overall a learning experience, whatever I had, and I feel it is mandatory for all. Um, so in trading, like mostly I'm active in F&O trading, and for cash stocks, for equities, I'm active in the bull market only. Mostly when market falls, market goes going in a sideways market, or market is going through a um, BR is biased. That time I try to avoid the small mid caps, because I know that is the worst time when I can trade in the equities. So I have my specific timings for the trades. I have my specific strategies for particular market conditions. Like for example, I know when my strategies will work. Okay, so that is the first thing that a trader must know, when their strategies will work and when they will not. So one thing I can guarantee, that not a single strategy will work for every day, every minute, every time, every year. No, it will not. So we have to understand when my strategy is going to work and when it is not. So when it is not working, or when that market condition is not supporting with that particular strategy, better to trade with less quantity, and that time we can try to learn more aspects, learn more knowledge, whatever we can gain from other type of strategies. So I have few, and I know when trend following is not going to work, that time my and another strategies will work. So it depends on the market condition, and it depends on the trends as well. So in secondary trend, I avoid equities. I avoid buying the breakouts, because I know that time breakouts will not work as it was working in the bull market. So in bull markets, we will get so many breakouts every day, and the rewards are extremely high in those breakout trading. And during the bull market, I feel that is the best type of trading opportunity we can have. And F&O trading is always, it is evergreen, for me especially. It is not it can be different for others, but for me F&O trading is evergreen, because it doesn't matter whether it is bull market, bear market, choppy market. We can go with different strategies, and we can gain a little bit, or uh, it depends on the market as well sometimes. So it is all market dependent. So one thing I believe, that if market is giving the opportunity, then we can make good profits. If market is not giving the opportunity, so we cannot change the market. So we have to accept that, okay, market में अभी opportunity थोड़ा कम है. So we have to accept those facts. Like this type of market, in last few days market is going through a choppy sessions. It moved up by 300 points. Next day it dropped. So it is not gaining the participation, not in the higher side, not in the lower side. So it is within a range since almost last 7 8 days, 10 days almost. So it is currently extremely choppy market. So we have to understand market is choppy. Don't expect big moves, obviously. So this is what I am. I go with the market.
If market is trending, I go with trend following techniques, and I know that time my trend following techniques will work very well. When market is not trending, when market is going through secondary moves, going through choppy sessions, sideways market, that time better to avoid any kind of breakouts, better to avoid any kind of aggressive trading strategies, and try to go with the other some non-directional or some other strategies that work in sideways market. So that is what I do mostly. And I trade in different strategies. I trade with different segments. Like sometime I buy options, sometime I go for option selling, sometime I go for option strategies, sometime mostly I go for stock futures buying or indices. Futures trading mostly I do with F&Os. And when market is it is going through a bull market, bull phase, that time I start equities breakout trading. So that is what I am. That is what I do mostly. So, in last 5 minutes, I have learned that the crux of your trading setup is you are just diversified everything. Means जो कहते हैं ना कि investment में you don't need to put every egg in one basket. You just you must diversify everything. That's what you do. है ना? Yeah, but diversification not in portfolio manner, but in trading manner, like the trading opportunities, the market selection. So, what's your mantra in investment regarding investment? See, How you do? actually, I get very less time for investments, so I choose to go for the indices. Like if I think market में बहुत अच्छा downfall आ गया है, at least 5 to 10% kind of drop आ गया है already. So that is the best time to go on or think about the Nifty ETFs, Nifty Bs kind of. If it is like currently, I'm very bullish on ITBs. Like it may be possible that you can just find your best IT stocks. The obviously I have few, but. But I choose to invest in the sectoral indices mostly because I can completely rely upon that, because I don't have time for the fundamental analysis, and I don't do that. I do what I can do. Okay, and I know I'm a technical person, I'm a directional person. I can go for the directional trades very well. I can identify the directional moves. I know कहाँ से market move करेगा, कहाँ से नहीं करेगा. Mostly it is not guaranteed, but still, we have everyone has on levels, and I think those levels work most of the time. So I go for the directional trades. So in that time, if I feel for long term some indices has touched any particular zone, touched any particular strong support zone, so that time I feel it is a very good idea to go with that particular index, because it is quite safe. A stock can drop. Next day it can drop anywhere. If it is if in the stocks, it can be more than 50% in a single day, but your indices will not. So it is quite safe. And first of all, second of all, if you are very bullish in mid cap, so you have to go for that particular stock analysis, right? So with breakouts, it is trading, and investment is different. I go for equities for trading purpose only. Like for breakouts trading, sometimes we get 20% upper circuit in a single day. That is unexpected, abnormal kind of returns. But that happens. बुल मार्केट में बहुत कुछ होता है, ठीक है, बट वो अभी अवेलेबल नहीं है. So वैसा ब्रेकआउट आएगा अभी, so that time that breakout may not work. That time you will see that after any breakout, after a breakout, you will see price will come back to the previous lows again. So that may go for the retest, that may go for the time consuming sessions. So in bull market, breakouts are very good. That is especially for trading purpose, but for investment purpose I choose that mid cap Bs,
or Nifty Bs or sectoral indices like ITBs, that I feel more comfortable with, because I don't need to track. I don't need to track any stocks, because I want to pay the best time, my most of the time in that particular segment, in that particular work that I can do. That is the trading. Okay, so my investments mostly in sectoral index, and few stocks. Obviously, I have. I hold few stocks that percentage is low. That is not comparable with those ETFs or Bs. Great. It means for a new person, if a person has come recently has joined the stock market and they don't know much about fundamentals and everything, so they can just start investing in Nifty Bs and ITBs, whichever sector they want and they are looking for, they can go with that, right? I think with close eyes, if Nifty is dropped by 10%, go for part of your investment. Just close your eyes and go for the investment. It is 15% down, add more part. Like if you are ready with 5 parts, so keep adding your parts. 20%, 20%, 20% kind of. So it is 20% down if it comes. So invest the whatever you have. Like kind of this type of If we say 20%, beer people will come. yeah, yeah. But still, yes, sir, Nifty is in all-time bull run. It is a primary bull run. So even if it is 10% down, it is a huge drop. So that is the best time to add ETFs. Even now, Nifty is trading around. It is near 18,000, below 18,000. So still, it is a good time to add some ETFs, because in Nifty, in Indian market, it has to grow, because if you have seen, in last year FIIs have sold lakhs of crores, near about 3 lakh crores, near about 2.79 maybe. So still market is holding the levels very very strongly. So if market started rising, um, so that levels, we may not imagine where it will go. Like when market moves up, it moves up very sharply. If you have seen, when market drops, it is falling. In this last around 2 months, last high was made during the November. So from December and half of the January already passed. So 1.5 months. In these 1.5 months, only 1,000 points drop we have seen, right? Around. So this 1,000 points can be wiped out in a single week if market starts moving up. So it is nothing. 1,000 points is nothing. So I'm fairly bullish on Indian market. I'm fairly bullish on um, few indices like mid cap index. I'm very very bullish on Nifty mid cap index. So this is the best time, I think. Even we had in last year, we got a very good time during the June July month, when market dropped near below 16,000 that time. So it was very good opportunity to add in lower levels. So when you want to invest, you need to wait for the best time. Every day, any time is not your investment time. So that you have to understand, and rest of all, it depends on your personal choice as well. Great, sir. That's pretty simple and clear. How to invest and how to trade. That's good. There's some this person who wants to speak something. If you have any query, please ask, sir. Stock fanatic. If you have any query, please open your mic. जी भाई maybe we can continue and जिनको questions है वो tweet पे जाके कर सकते हैं comment and we'll pick it up during the end of the session.
Okay, 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 great. Joy sir, Nifty is standing right now at 18,000, 17,900 something, Right. correct? So, what's your view for current week and for the coming 2 3 weeks? Because budget session is coming. So, what's your view and what's your analysis on See, this? my view doesn't matter. Market doesn't care about anyone's view. So whatever market is doing, we have to follow that. So I strongly believe that these 17,800 levels are very strong levels. It is holding the market since a long time, but it is not the primary levels. So it is not my target, but still, let me tell you, I think if 17,800 breaks, then we can see below 17,400. That is almost 400 500 points down from this current level. So that may be possible if it breaks, but if it not, then it will move up. Currently market is choppy. We have no control over the market, so we have to accept that fact. Okay, my view will not change the market. Whatever market is doing, we have to follow that. So market currently, it is completely choppy market. It is completely indecisive. So in this type of indecisive market, we should not have any decisive view. So uh, if this congestion, if this range bound market breaks in the downside, then it will go, or it will trade below 17400 for sure. And that will be the very good area to add more investment stocks, or any other ETFs or Bs. Actually, in that area, the traders started becoming investors. It happens. That So, happens because of random trading, because of higher greed, because of higher risk. People trade yeah, with correct. the higher quantities with the expectation of good return, but you will always see that with higher quantities, mostly people cannot make the higher profits because they cannot hold. That impulsive feelings will always be there. With bigger quantities, he cannot use their logical mind, so it is very tough to make the best profit with the bigger quantities. Always try to trade with limited quantities. Always try to trade with the logical mind and take the rational decisions, and that's all. Okay, great. Kunal sir, what's your view on current market scenario? Means current week and upcoming weeks, 2 3 weeks. Great. So I think I am also of the same opinion as Joyce said कि अभी कोई direction है नहीं. But definitely as everybody is tracking, right, 17,774, 77 is the level people are tracking, but 10 15 20 40 पॉइंट इधर उधर होना is not at a big deal because अभी विक्स को भी देखोगे, आज विक्स भी बढ़ गया था, इंडिया विक्स तो अराउंड 15 16 पे चल रहा है. तो आई वुड से 17,700 तक आई विल स्टिल बी कंफर्टेबल. डेफिनेटली लॉन्गर रन में वी आर डेफिनेटली बुलिश एज एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट. बट 17,700 का लेवल इज समथिंग दैट आई एम ट्रैकिंग. मोर ओवर मुझे मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मार्केट इज, कि आज का मार्केट वाज नॉट हैविंग मच ऑफ अ डायरेक्शन बिकॉज मोस्टली यूएस मार्केट आज बंद है, राइट. तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई डू नॉट सी एनी डायरेक्शंस एज सच, बट सिंस इट इज होल्डिंग दैट 17,800 वाला लेवल, तो देयर आर चांसेस. अगर मुझे कोई बोलेगा कि इफ यू हैव टू टॉस अ कॉइन एंड टेल कि कौन सा किस व्हाट वुड यू चूज, आई विल स्टिल बी ऑन अ बुलिश साइड. मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट अभी भी 18,200 300 तक में एक बार जरूर जाएगा, और मे बी इट कैन टेक सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट. जो हमारा बजट से पहले वाला एक रेस्ट तो डेफिनेटली आने ही वाला है, बट उससे पहले एक बार मार्केट को ऊपर जाना चाहिए इज व्हाट आई फील. बट आई मीन जनरल एडवाइस फॉर पीपल इज कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के हिसाब से. देयर लॉट ऑफ स्टॉक्स इन आवर रेडार जहां पर कि यू वुड सी गुड मूवमेंट, जहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी है, राइट. अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई क्लैरिटी नहीं है, और जिस साइड भी ब्रेक होता है उस साइड काफी शार्प
रन होगा, राइट? अगर वो 17,700 या 800 जो भी लेवल है, अगर वो लेवल तोड़ता है तो डेफिनेटली देयर विल बी ए क्विक 500-600 का डाउन साइड, एंड सेम गोज विथ अपसाइड आल्सो, राइट? 18,300-400 तक का डेफिनेट लेवल है जो कि वी कैन स्टिल रीच आउट, राइट, इन व्हाटएवर नेक्स्ट 1 or 2 वीक टाइप, राइट? तो अभी मेरे लिए भी इंडिसाइसिव ही है, बट हमारा प्राइम प्ले अभी टुवर्ड्स द स्टॉक ही रहेगा, कि स्टॉक स्पेसिफिक रहो जहाँ अच्छे स्टॉक्स दिख रहे हैं, राइड ऑन दैट एंड देन कीप मूविंग, लाइक सेक्टर पकड़ लो या स्टॉक पकड़ लो, व्हाटएवर, राइट? बट इंडाइसेस पे तो अभी इंडिसाइसिव ही है यार हम लोग भी। ग्रेट। एंड जॉय सर, स्टॉक्स की बात आई है तो अगर आप कुछ बता सके 2 3 4 स्टॉक्स विच आर इन योर रडार फॉर अपकमिंग वीक्स। See, if Nifty drops, if Nifty breaks this last low, then it doesn't matter which stocks you are holding. Mostly they will get affected, and that we have to accept that if Nifty falls, Nifty breaks that low, that time we have to exit from any kind of longs. As per my F&O trading, I do that. I don't try to trade against the index. I go with the index direction mostly. If Nifty is in demand, I go for the stocks that is showing a buying opportunity. If Nifty is in supply, then I go for the short trades. So currently, I can see PSU banks are very bullish, like PNB, BOB. They are very bullish. Even few other banks like Federal Banks, Federal Bank, that is also looking very good. What's your view on JNK Bank? I'm holding it. JNK Bank, I don't track it, but still it is good, not bad. But today it moved up, then dropped. It needs to break Uh, 60. my average price is 41 actually, so I'm Uh, waiting for. okay. Just a minute. It is having some levels, so it will face some supply sales 66 area. So currently 57. So it is tough to break that level. Unless it is breaking 66, it is currently not a buy. If it breaks 66, then it may reach around more 20 points higher. So that is the primary level that breaking that level will change the whole structure. So unless that level is broken, structure is still it is under the primary level. So it is it may not give you best return unless it breaks that level. So hope for the best if it is holding the last low around 50 level kind of. So around 53, the last low was 53, so if it is holding it, then you can keep holding, no issue. And along with that, IT stocks, I'm definitely bullish with ITs like Tech Mahindra, TCS, Infosys. They are doing good. And other than that, metal stocks like SAIL, Tata Steel, both are looking good. Uh, they are also likely to continue the up move. Uh, and I know that few. Oil sectors are also growing from last 1 or 2 weeks. ONGC, BPCL. There's also movement in those stocks as well. BP, आपने check किया क्या? BP BPCL and ONGC. BPCL, ONGC, they are good, but they are already reached to their levels, so I don't think any more upside is there. Few media stocks can also uh, do good moves. You can see that particular stocks, particular sector, and I just want to say something about the pharma stocks. Few small cap pharma stocks are looking good. Why I'm saying, because because I'm tracking few stocks in small mid caps, and they are very near to their primary levels, and now breaking that primary level is very tough for them. So I don't know if market doesn't break the last low, if market Nifty moves up from here, then maybe the small mid cap pharma stocks, healthcare stocks,
they can give you very good return. So that we may track them. Just if market rebound, then we can get some good opportunities there as well. Okay, so pharma, IT sector, and PSUBs are in your watch list for upcoming And for weeks. in large caps, I want to add Reliance 2300 to 2400. That level is very very strong level. I don't think 2300 will be broken. I don't think. So if it drops a little from here, it is now 2444. So if it drops around 4-5% from here, it will be very attractive to add in those levels. So I'm just tracking it. I'm just adding it in my watch list. And if you see in hourly chart, it is looking good, not bad. Because in last few days, it has dropped from 2600 to 2444. So it is quite interesting to see, because I know that 2300 will not be broken so easily. So it is not so easy to break that level. That is very strong level. So if it drops, it will be another opportunity. Great, sir. There's a query, sir, in our comment section. At which ETF will you prefer in mid cap segment? Which one? Which ETF for mid cap See, there sector? are so many ETFs available. If you just search in mid cap ETF, you will get Mirai Asset mid cap. You will get DSP. You will get ICICI. So many Nippon, Motilal. So many mid cap ETFs available. It doesn't matter. You just go with few good names, and you just I think Nippon is also yeah, available. Nippon is I there, and Nippon is, I think it is the oldest one. So you just go with any good name. Okay, great. Guys, if you have any queries, please ask in a comment or request for a speaker as well. And another one that I should speak out some disclaimer that none of our discussion is recommendation. Please take your own decision. Yeah, yeah, that's a disclaimer actually. Correct, correct. So this Roshan Kumar Rai. Please, Roshan, if you have any query, please unmute your mic and ask anything. Roshan. ओके, नो इशू। अच्छा कुणाल सर, ईटीएफ में अगर इन्वेस्टमेंट का है तो विच ईटीएफ यू सजेस्ट? So ETF wise, we do not track per se, Kazi, because liquid is solely on specific equity per se, right? So ETF में we are actually getting into it, but mostly as I said, right, कि हमारा जो भी mostly जो recommendation होता है वो AI driven होता है, और ETF अभी हमारे पास नहीं है, तो I do not want to comment much on that. Obviously, as Joy was telling, there are many many ETFs there. मैं particularly किसी को track नहीं करता हूँ, because I think stock wise भी अगर हम लोग रहते हैं तो definitely we take benefit of it, right, in terms of movement and momentum and all that. So stock wise I can recommend some, not recommend per se, but tell ki which are there in our radar. But ETF may at this point in time, I would like not to take any names. Okay, then please means give suggestion about some stock mid cap or large cap or a sector wise, please. स्टॉक वाइज में मतलब एज डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल विल हैव टू रेस्पेक्ट कि निफ्टी का लेवल जब तक ब्रीच नहीं हुआ है तब तक दीज स्टॉक्स आर गुड। द मोमेंट निफ्टी का जो लेवल है ना 17,700 वाला जो लेवल है, वो लेवल अगर टूटेगा तो ऑब्वियसली एज जॉय वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग, राइट, कि वो अगर टूटेगा तो वो जो सेंटिमेंट जो निगेटिव होगा वो सारे स्टॉक पे होगा। बट एज लॉन्ग एज इट इज 17,700 से ऊपर है तो there are some of the stocks like Max Financials बोल के there is a stock trading at around 800 odd, 801, 802 type पे उसने आज क्लोजिंग दी है। You can track that. That is one. Balakrishna Industry is on a for a little bit longer horizon, not at a very immediate horizon, but अगर आपका व्यू लाइक एक आध महीने का है तो बालाकृष्ण इंडस्ट्री is something that is good.
अगेन सेम echoing the same sentiment as Joy said कि जो भी हमारे जो भी बैंक्स है, PSU बैंक राइट, उनमें काफी ट्रैक्शन दिख रहा था आज. देयर वाज अ प्रीटी गुड वॉल्यूम स्पाइक इन फेडरल बैंक, यूको बैंक, ये दोनों बैंक अच्छे लग रहे हैं. Right. So MSTC is one another stock. So basically it is IDFC जो अभी हम लोगों ने अपने रडार पे रखा हुआ है. उसमें IDFC है, MSTC है, उसके बाद मैक्स फिनेंशियल है, MFSL, राइट, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक. इतने ये सारे 6-7 जो हैं जो हमारे परफेक्ट रडार पर हैं अभी. Great. So means MSTC and Balakrishna, then Max Financial. These are all are actually they are on a breakout, on a verge of breakout. So it's Yes, good कुछ action. में ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है, कुछ में होने वाला है. वॉल्यूम स्पाइक काफी अच्छा, डिलीवरी वॉल्यूम अच्छे हैं, तो गिव्स अ गुड सेंस कि मतलब यू कैन सी वेरी क्विक मूवमेंट ऑन एनी ऑफ दीज. अगर मार्केट थोड़ा भी सपोर्टिव रहता है, इवन कंसोलिडेट भी करता है, तो भी यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट. बट अगर डाउन साइड होता है तो ऑब्वियसली मतलब वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. Okay, great. So, listeners, if you have any query, any question regarding any stock or suggestion, please either आप comment कर दें हमारे tweets पे, या फिर आप यहाँ पे request raise कर सकते हैं. मेरा है For सर. mic. हेलो, हाँ, रोशन जी प्लीज. बोले सर मारुति सुजुकी का क्या रहेगा अभी? हेलो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई, फिर से बोलिए प्लीज. मारुति सुजुकी का सर. मारुति, जॉय सर, योर व्यू ऑन दिस. मारुति अभी ठीक ठाक ही है. इट इज नॉट बैड. अबव 8500 अगर ये होल्ड करता है तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. अभी क्या है ना, मार्केट भी चॉपी है, सब कुछ वैसा ही है. अगर एक दिन ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट डे नीचे आ जाएगा. तो अगर ये 8500 के ऊपर जाता है, ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा. बिलो 8500 चॉपी ही रहेगा. और if market drops, then it will also drop along with the market. So just keep that 8500 level in mind, the spot level. Bullish above that. थैंक यू सर. ओके, कुणाल सर, योर व्यू. या सिमिलर. अभी तो आज का चार्ट अब मैं देख ही रहा था व्हाइल दिस क्वेश्चन वाज कमिंग अप. तो 8400 के नीचे तो वीक ही है, बिकॉज इट हैज ब्रोकन 200 डीएमए जो हम लोग ट्रैक करते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म. उस वहां तक उसने जाके रीटेस्ट किया एंड देन अगेन गिव अ रेड कैंडल. एंड सेम थिंग हैपेंड फॉर 20 डे में भी तोड़ दिया है, 200 डे में भी तोड़ दिया है. 3-4 दिन पहले इसमें एक डेथ क्रॉस बना है, विच इज द टेक्निकल टर्म दैट वी से व्हेनेवर द द लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम जो भी रहता है. जैसे अभी यहाँ पे 200 डेमा को 20 डेमा ने कट किया है. सो बेसिकली लॉन्गर, सो हाउ डू वी, एटलीस्ट फॉर द ऑडियंस राइट, हाउ डू वी यूजुअली ट्रैक इज, कोई भी स्टॉक जो होता है जितना लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पे सपोर्ट लेता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है. और 20 डे में इज लाइक लास्ट 1 मंथ का जो भी सेंटिमेंट है. सो बेसिकली लास्ट 20 डेज और रादर लास्ट 1 मंथ का जो सेंटिमेंट है वो निगेट कर रहा है लास्ट 1 ईयर के सेंटिमेंट को, राइट. सो इन टेक्निकल टर्म वो क्या हो रहा है, 200 डीएमए को कट कर रहा है 20 डीएमए, विच इज यूजुअली ए नेगेटिव साइन, राइट. तो वो 4-5 दिन पहले हुआ था. उसके बाद से स्टॉक ट्राई कर रहा है उसको निगेट करने का, बट आज अभी तक कर नहीं पाया. तो वही 84-8500 के नीचे तो डेफिनेटली मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर पीपल टू बाय. उसके ऊपर वी कैन स्टिल टेक अ सेकंड सजेशन, बट अंटिल इट क्रॉसेस 8500, जैसे आज का जो भी हाई है ना, जब तक वो नहीं काटेगा तो आई वुड सजेस्ट नॉट टू टेक एनी पोजीशन इन दिस. किसी के पास पोजीशन है तो दे कैन होल्ड विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 8000 और सो, बट उसके नीचे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. Thanks, sir. Roshan, I hope you got your answers. So, यस सर, there's थैंक यू. okay, thanks. There's one more query. People is from just a second. There's a query for DMart from Vikas Vadba. डीमार्ट के आज हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन आए थे इनफैक्ट. आज शायद उसका रिजल्ट भी आया है डीमार्ट का, और 5% टैंक था सुबह में. आई थिंक इट क्लोज्ड आल्सो
at around 4.8% लॉस पर था. सो इसमें हुआ क्या, प्रॉब्लम इज कि पीपल वर आस्किंग कि रिजल्ट तो ठीक ठाक ही आया है लेकिन क्यों ये नीचे गिर गया है, राइट. देयर आर टू थिंग दैट वी सी. वन इज जो उनका जो रिजल्ट था ना, रिजल्ट में मार्जिन पे काफी इम्पैक्ट है. मार्जिन इन द सेंस कि जब भी आपका जो भी रेवेन्यू होता है और जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसके बीच का जो गैप है इज नैरोड डाउन फॉर अ नॉन फूड वाला जो भी सेगमेंट है ना, जैसे कि अभी वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर है या व्हाटएवर, मतलब जो कि नॉन फूड वाले जो सेक्शन है, ड्यू टू द इन्फ्लेशन का जो भी प्रेशर है, जो भी डिमांड है, इनका मार्जिन पे काफी इम्पैक्ट आया है इस पर्टिकुलर क्वार्टरली रिजल्ट में, जो कि थोड़ा सा सेंटिमेंट डैम्पनर है. दूसरा क्या है, ये स्टॉक जो टेक्निकल ब्रेकडाउन पर ऑलरेडी था, आप अभी अगर उसका चार्ट उठा के देखोगे तो देयर वाज अ सपोर्ट समवेयर अराउंड 3800 3850 टाइप पे, इसका काफी दिन का सपोर्ट था. इट इज लाइक जुलाई के बाद वो उसके नीचे कभी भी नहीं गया है. सो लाइक 6-8 मंथ का एक सपोर्ट था, बट आज उसने गैप डाउन दे के उसके नीचे क्लोजिंग दी है विथ अ डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया, जो कि इनडिसाइसिव कैंडल होता है. बट अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो ना, तो आप इसका आर्ली चार्ट भी देखोगे तो इवन कभी कभी क्या होता है ना कि जब मार्केट में जैसे न्यूज आती है तो सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है, बट ड्यूरिंग द डे वो रिकवर हो जाता है. बट इस स्टॉक में अभी क्या देखा मैंने कि इसका आर्ली चार्ट भी जो है वो भी वैसा ही है, आर्ली चार्ट में भी रिकवरी के कोई साइन दिखे नहीं. और डेली कैंडल काइंड ऑफ अ डोजी बना है, नॉट अ एग्जैक्ट डोजी है. डोजी इज लाइक इंडिसाइसिव कैंडल होता है, जहाँ पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज होता है. इसका भी ऑलमोस्ट मतलब जब गैप डाउन जहां पर हुआ ऑलमोस्ट वहीं पर जाके ऑलमोस्ट क्लोज दिया है, 50-60 पॉइंट इधर उधर होगा. बट यहाँ पर तो मतलब वी विल हैव टू जस्ट बी ऑन अ वॉचफुल मोड, बिकॉज 5% का गैप डाउन दिया तो समटाइम स्टॉक ट्राइज टू गो एंड देन फिल द गैप एंड देन अगेन कम डाउन. तो जब तक वो ऊपर वाला में लेवल जो है वो 3900 से ऊपर नहीं निकालता है, तब तक तो डेफिनेट नो है फॉर अ फ्रेश बाइंग. somebody who has a position already, उनके लिए ये काफी क्रिटिकल है. आई थिंक 1-2 दिन के बाद दे शुड एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग सम मोर सजेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स कि अभी क्या करना है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो क्या करना है, नीचे जा रहा है तो क्या करना है. तो व्यू तो बेयरिश ही है अभी, मतलब बाय एंड लार्ज. बट अभी कभी कभी क्या होता है कि एक दिन का इमीडिएट सेंटिमेंट्स के कारण से गिर जाता है, दूसरा तीसरा दिन रिकवर हो जाता है. बट द एडवाइस वुड बी कि पुल बैक में इमीडिएटली डू नॉट जंप कि कल ये 4% ऊपर चला गया तो जस्ट एज्यूम कि अभी वो हो गया, अभी इसका डाउन साइड, अब उसे बाय कर लो. बिकॉज वो नॉर्मली जब भी गैप गैप होता है कहीं पर भी, वो गैप फिल करने के लिए स्टॉक जाता है और वो गैप फिल करके फिर से नीचे आता है. वो बहुत सटीक हमारे लैंग्वेज में सॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है. इवन दो लिक्विड में हम लोग सॉर्ट नहीं करते, बट अगर हम लोग अपना पर्सनल एफएनओ करते हैं तो वहां पे भी यूजुअली सॉर्ट दैट स्टॉक, और बड़े बड़े प्लेयर वही करते हैं. तो एडवाइस इज कि जब तक वो 3900 या 4000 लेवल नहीं निकाले, डू नॉट मेक एनी फ्रेश एंट्री. जिसके पास है वो 2-3 दिन के बाद किसी एक एक्सपर्ट से रिव्यू करा लो आप कि उसका क्या करना है. वन क्विक थिंग इज कि आप लिक्विड में जाके लीमो बोल के, देयर इज अ फीचर हमारे ऐप पर, वहां पर आप आके पूछ सकते हो 3-4 दिन के बाद कि क्या करना है. सम एडवाइजर विल एक्चुअली हेल्प यू विद दैट, और आप हमारे ट्विटर पे डाल देना, समबडी विल हेल्प. Thanks, Kunal sir. Joy sir, there's a query for you. NMDC and CAMPS का view. एनएमडीसी Yes. एनएमडीसी अभी यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा बाबू. ये तो ऑलरेडी जो लास्ट टाइम अक्टूबर में आया था वो लेवल पे टच कर रहा है, फिर अभी थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट ही है. तो इधर से तो नया पॉजिटिव व्यू बनाने का कोई रीज़न नहीं है. और अगर ये नीचे जाता है तो भी ये अराउंड 115 के करीब जाके 110 115 पे जाके थोड़ा सपोर्ट मिलेगा उसको. एंड अनदर वन CAMPS. camps. Okay, that is looking good because today it has broken the last high, that was 2284. फाइन. सो कैम्स अगर ऊपर जाता भी है तो अराउंड 2500 को जाकर गिर जाएगा. तो अभी 2292 है, तो अपसाइड पे थोड़ा पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने का, बट 2500 पे जाएगा तो वहाँ से टच करके गिरेगा. तो यही है कैम्स का. Thanks, sir. I hope listeners got their answer. Satish ji is here. Satish ji, your query, please unmute. Thank you for giving me speaker.
Mr. Kazi, Liquide, and Joy Mukherjee. My inquiry about Mahindra Logistics and Adani Power. What is the rate today? Is around that about 10 rupees here, there is my purchase rate. Can you guide me on that? Mahindra Logistics and Adani Power. Joy sir, Mahindra, please. what was your purchase price? Uh, Mahindra. Mahindra, I think for 469, if Or I'm not 69. wrong. Okay, fine. So near about the current levels. So, and what is your view for this particular stock? Like you want to hold for a few days or few years? No, I can wait. No problem. Okay, so let me tell you that this stock structure is not very good. So if it is for short term buying, then fine. But if it is for long term, then I don't prefer this type of structures for long term investment. Actually, practically, this stock can revisit that last low around 435 kind of level. So better you find some other good stocks. This structure is not strong structure, but still fine. Oh, Upside it is capped around 570 levels and around 620 630 levels. So वो levels को break करके ऊपर जाना, it is very tough to break these 620 630 levels, 640. So upside full of supply. So why I'm saying that, because even if you get a breakout, even if you get a good day to 5-10% up for any reason, you will get selling pressure at higher levels. So these stocks will not move easily at upside. So that is the problem with this stock. And another one, Adani Power. yeah. Hmm. Well, Adani Power, the actual level is around 2 from 220 to 240. This is the level from where that stock will move. So it has touched few days ago, around low was 249 few days ago. So if it moves above 300 level, हेलो 305 3010. सर, गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रहा सर मुझे। Am I audible? Yes, yes, sir. Continue. Yes, Joy Saab, I'm listening you. Okay, fine. So if your Adani Power moves above 310, then it is very good. If it moves above 330, then it is extremely good. But below this 310 and 330, it may go choppy, sideways, kind of, because it has already given a very good run from 130 to 430. So it will spend some time here, and I don't believe that stock will move below 240 very easily. Fine. So if it drops below 240, then only you should worry a little. Otherwise, you can just keep holding. It may spend some time, but it shall move up if it has to. अगर इसको नहीं जाना है, गिरना है, तो it will break this 240 level. Thank you very much, Joy Saab. Thank you. Welcome. Thank you, Joy sir. Thank you, Satish ji. I hope you got your answer. Yes, Kazi bhai, I got it. Because Okay. I don't hold for very long time because I am very senior citizen. If I would have been younger, सर, आई एम नॉट एबल टू लिसन। Surendra bhai, please hold on. I'm talking, please. Because I'm a senior citizen, so there is no sense in holding for 10 years, 15 or 20 years. Young people should play for a long innings. You get very good return. So I hold for 6 months or something like that. Let's see. Thanks for advice, Joy Saab and Kazi Saab and Liquid Bhai. Thanks a lot, sir. So, Joy sir, 2 3 और queries फटाफट ले लेते हैं because already we are going with for almost 1 hour. So we'll take 2 3 more queries, then we'll close it down. Okay. So Karthik is here.
Karthik, please unmute and ask. Hey Joy, I want to have opinion on two stocks, Aurobindo Pharma and SP Apparel. Okay. For SP, currently it has broken the last low. Sadly, that last low was around 308. It has broken down that low. So still, unless it is breaking the 290 level, you can hold. If it breaks 290 level, better to change your stock, because I cannot see any strong level, because it may drop around 230 to 35 levels as well. So no reason to hold it for that long. So that is SP, SPL, and another one was, Aurobindo Pharma. well, Oro Pharma is not bad, because as I said a few minutes ago, that few healthcare and pharma stocks are looking good, and along with that, Oro Pharma is among them, who is very very near to its primary levels. But the problem is that the primary level is so large that we cannot tell you a very specific levels, but it is very very um, attractive levels. Still we can expect that around from 400 to 420, 400 to 420, these levels can hold the price. We can expect, no guarantee, because because of the large primary level, quite large, very big size candle is there. Upside, it will face strong resistance around 550 to 565. Breaking that level will be very tough. If it breaks 570, then again it will face some supply around 600 levels. So upside is capped above 550. So currently 446, still 100 points is near about 20-25 points kind of movements. So that is Thanks, Joy. welcome. Thanks, Joy sir. Kunal sir, your view on Aurobindo Pharma? व्यू तो नहीं है यार जो जॉय ने बात किया कि जो कैंडल है वो काफी वाइल्ड है, जहां पर कि सपोर्ट का जो रेंज है वो लाइक 100-200 पॉइंट्स का है, तो वहां पर वो रेंज बताने का कोई खास पॉइंट नहीं है. बट आई एम इन लाइन विथ व्हाट जॉय इज टेलिंग. तो अभी मैं देख रहा था मंथली चार्ट ही उसका. मंथली चार्ट में लास्ट सपोर्ट पर अभी मुझे दिख रहा है 440 वाला जो रेंज है ना, दैट इज प्रीटी गुड सपोर्ट. बट यहाँ पे ब्रेक होता है तो डेफिनेटली यू विल सी अ गुड डाउन साइड. तो अगर फ्रेश एंट्री है तो मतलब आई वुड ऑल्सो से कि अभी थोड़ा अवॉइड करते हैं. बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं. जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे क्यों इन्वेस्ट किया जाए. Karthik, I hope you got your answer. Okay. Yeah. It's not a fresh entry. Just got stuck into it, thinking it will go up. So Actually, this stock is very near to its primary level. Primary level means this is the level from where this stock is ready to move. But the problem is the size of the candles. It is too large. So that is the problem. We cannot specify the particular level. नहीं, अगर आपके पास है तो अभी कुछ देर के लिए तो डेफिनेटली होल्ड करो. दिस इज नॉट द लेवल टू एग्जिट. यूजुअली दिस इज द लेवल टू एक्यूमुलेट मोर. बट अभी आप एग्जिट मत करना इस पर. उसका एक वीक का कम से, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एटलीस्ट 1-2 वीक का बिहेवियर देख लो. जब तक उनका एमडी का सबमिट लॉ रिलीज नहीं होता तब तक तो होल्ड करूंगा. हाँ. श्योर. Okay. Kanusha is here. Kanusha, please unmute your mic and ask. हेलो Yes. सर, मैंने अपार इंडस्ट्रीज और नेल्को लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो कैसा रहेगा. Kunal sir. हेलो
हाँ बिल्कुल मैं देखता हूँ। अपार इंडस्ट्री बोला ना आपने? हाँ, अपार और नेल्को। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है? हाँ, मैंने लॉन्ग टर्म 10 साल तक उसको देखना ही नहीं है। नहीं, कोई भी स्टॉक कभी भी वैसा नहीं लेना चाहिए कि 10 साल तक देखना ना पड़े। आप 10 साल तक बेचो नहीं इज़ ऑलवेज़ ओके, बट 10 साल तक देखो नहीं इज़ नेवर ओके, बिकॉज़ कंपनी को जो आपने जिस फंडामेंटल से लिया होगा वो फंडामेंटल कभी भी चेंज हो सकता है। तो बराबर। कीप अ वेरी पीरियोडिक रिव्यू। जिन्होंने येस बैंक खरीदा होगा ₹300 पे, वो भी वही सोच के लिए होंगे कि फंडामेंटल अच्छा है, बट धीरे-धीरे फंडामेंटल चेंज होते गए। सो पीरियोडिक मॉनिटर करो। होल्डिंग फॉर अ 10 ईयर इज़ ऑलवेज़ ओके। राइट? तो ओके। कैंडल वाइज, चार्ट वाइज, फंडामेंटल वाइज आल्सो अपार इंडस्ट्री इज लुकिंग फाइन। तो अगर आपका मल्टीपल ईयर का व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड इट। और दूसरा स्टॉक क्या बोला था आपने? नेल्को, नेल्को, NELCO, ये हो ना अनिल को? हाँ टाटा ग्रुप की कंपनी है। हाँ हाँ, टाटा ग्रुप की कंपनी है एग्जैक्टली। और नेल्को आपने किस लेवल पे लिया था सर, इफ आई मे आस्क? मैंने अभी लिया 660 में, अच्छा, और लॉन्ग टर्म के लिए लिया आपने? लॉन्ग टर्म। ओके, माय चार्ट इज हैंगिंग, गिव मी जस्ट अ मिनट, चेकिंग। टोटल 1000 शेयर लेना है, अभी 200 ऐड किया है, तो और कब कौन से लेवल पे ऐड करूं? अब बस देख के बता रहा हूँ। और नेल्को आपको 1000 क्वांटिटी का एपेटाइट है आपका, ओके। और आपने अभी 650 के इन एंड अराउंड लिया है। 660 में। 660 पर लिया है। एक सपोर्ट है इस लेवल पे। मार्केट एनीवे अगर आप इस स्टॉक को देखो तो 4-5 महीने से डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, बट मतलब अगर कोई मुझे 10 ईयर का व्यू बोलता है तो थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ता है, बिकॉज देन इट इज मोर ऑन द फंडामेंटल देन द टेक्निकल्स, राइट? बट अगर मैं लॉन्गर टर्म व्यू भी अगर लेके बोलूँ तो यहाँ पर अगर आपने ऐड किया है तो अगर थोड़ा सा डिप मिलता है देन डू नॉट ट्राई टू एवरेज इट और सो, राइट? बिकॉज स्टॉक थोड़ा सा अभी लास्ट 4-5 महीने से डाउन ट्रेंड में है। एक बड़ी सी कैंडल बनी थी, काफी मूवमेंट आया था 4-5 महीने पहले, लास्ट 3-4 मंथ्स में उसे निगेट कर दिया है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है जब जब उस वॉल्यूम को निगेट किया गया है। तो मतलब दिस इज अ गुड लेवल टू एक्यूमुलेट एट अ स्मॉलर क्वांटिटी, बट एग्रेसिवली आपको जब वो अराउंड 800 के लेवल को ब्रेक करेगा तभी आपको एग्रेसिवली उसमें एंट्री लेनी चाहिए। कौन बट से अभी लेवल? 200 तो कीप ऑन, बट डू नॉट ऐड एनीथिंग अंटिल इट क्रॉसेस अराउंड 800 और सो, उसके बाद आप ऐड कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कुणाल सर। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जिमी की रिक्वेस्ट आई है, सो आई एम पुटिंग हिम ऑन स्पीकर लिस्ट। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जॉय सर से, देन विल रैप इट अप, ओके। जिमी प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेरी। हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। I have two queries. First of all is of Symphony. Is it good for long term or book profit now? Symphony for long term, like see, small mid caps में क्या होता है ना कि in most of the cases, a particular stock will give you very good up move throughout 1 to 3 years kind of time frame. Okay. And thereafter it will go for the time correction. So Symphony has given very good move since 2011 to 17-18. So after that it is going through the time correction mode. So unless it breaks out the 1500 1600, that level, whatever up move, whatever the things are, they are only going through just choppy kind of moves. In last few years, even since 2020 also, it has given zero return. So बिल्कुल. it is not currently, it is not the um, uh, not in the buy list, not in the any kind of And please, what about trend. a DMart, sir? Should I average now or wait for some time? Which one? DMart. DMart. Today's Just fall about wait. 5%. ओके, डीमार्ट 3350 पे आएगा, वहाँ पे टच करेगा, करके ऊपर जाएगा। आज का जो गैप है वो अभी इतना आसानी से फिल अप होगा नहीं। So whenever it drops to 3350, that will be a buying opportunity. If it
sharply moves up, so very good. If it doesn't, if it comes back again, then अराउंड 3200 पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा. उसके बाद अगर 3186 ब्रेक करता है तो एकदम नीचे पे 2900 2880 2880 28900 ये लेवल पे आके रुकेगा. तो ये है डीमैट का स्टोरी. थैंक यू सर. तो लेवल को याद रखें. ओके, थैंक यू वेरी मच सर. Okay, thanks a lot. तो कुणाल सर, शुड वी रैप अप? हाँ जी, बिल्कुल. 70 minutes हो गया. Thanks listener and thanks Joy sir and Kunal sir for this session. बहुत अच्छा सेशन गया ये. And guys, if you want more queries, if you have more queries, if you want more suggestion, then you can download the Liquid app. वहाँ पे एक ऑप्शन है लिमो का, जो कुणाल सर ने बताया था. कुणाल सर, फटाफट बस 1 मिनट में आप लिमो के बारे में एक बार और फिर से बता दीजिए. हाँ जी, लीमो में बेसिकली आप अपना ऐप डाउनलोड करो. वहां पर एक बटन होगा जहाँ पे लीमो लिखा होगा. आप उस पे जाओगे तो आपको सिर्फ 2 या 3 क्लिक्स करने हैं. तो सबसे पहले जैसे उस पे क्लिक करोगे, वहां पे स्टॉक का नाम आप सर्च कर सकते हो. जैसे ही सर्च करोगे, इट विल आस्क वन क्वेश्चन, डू यू होल्ड इट, यस और नो. अगर आप नहीं होल्ड करते हो तो नो बोल दो. जैसे ही यस बोलोगे तो आपको वो पूछेगा कि आपका बाइंग प्राइस क्या है, सो दैट यू कैन गेट अ कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन. अगर आपने नहीं बाय किया, आपको न्यू में बाय करना है, आप न्यू बोल दो. एंड देन यू जस्ट से कि आपका होराइजन क्या है, सो दैट बिकॉज आपका शॉर्ट टर्म का अलग व्यू हो सकता है, लॉन्ग टर्म अलग हो सकता है, मिड टर्म अलग हो सकता है. तो आपका जो भी व्यू है वो डाल के सबमिट कर दो. मेरा सिस्टम जो ऑटोमेटेड बॉट है वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा. विद इन 24 आवर यू विल गेट अ डिटेल रिपोर्ट की वर्डिक्ट क्या है और वो वर्डिक्ट क्यों है, विद अ वेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लिमो. एंड एट द सेम Great, I Kunal. want to thank Joy also. Joy, बहुत मजा आया स्टेज शेयर करके. एंड डेफिनेटली काफी सारे आपके जो भी फिलोसॉफी थे कि हाउ कैसे ट्रेड करना चाहिए एंड ऑल दैट, जस्ट लव्ड इट. सो थैंक यू सो मच जॉय फॉर जॉइनिंग द स्टेज. Thank you. The same here. And for participants, I just want to say a last word that market is not always bullish, not always bearish. So please be specific with your risk, with your direction, with your time, and all the best. Thank you. ग्रेट, थैंक यू सर. वो लास्ट के कुछ गोल्डन वर्ड्स थे एक्सपर्ट की तरफ से. वो जरूरी होता है. थैंक्स जॉय सर. थैंक्स कुणाल सर. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग सो मच टाइम.